Okay. So yesterday we finished with the sacrifice ratio as well. लेकिन sacrifice ratio वाला part record भी नहीं हुआ था, so we have to do that again. And I gave a numerical, which obviously, as expected, has not been solved. Okay. So let's first of all understand कि sacrifice ratio क्या है, ठीक है ना? So उसके बाद we'll just do the numerical together and go ahead with discussing monetarism. So this is where we ended with, where we have talked about के Okun's law जो है उसका एक generalized version क्या है ना? So Okun's law basically is coming from the relationship between unemployment rate, मतलब by definition है ना, वहीं से शुरू है. Unemployment rate क्या होता है? Unemployment rate is the number of unemployed people upon the labor force, and then we manipulate and we insert two assumptions in between, right? So वो दो assumptions हैं, that the labor force is constant and that the what was the other? So yeah, y is equal to n, right? So जो प्रोडक्शन फंक्शन का assumption है और जो लेबर फोर्स कॉन्स्टेंसी का assumption है, उसको लेकर हमें कुछ मतलब इस तरीके के रिलेशनशिप पे आए थे, which was what the Okun's law basically was in theory, right? And then we basically not we, Okun took this to data and plotted using this as the y variable, the difference between unemployment in the previous year and this year, and plotted it against the growth rate. तो ये plot करने के बाद जो actual relationship आया, that looked like this, right? Which was the empirical version, which was the truth for the US for that time period in which they were looking, 70s से लेकर 2010 तक, again they plotted it. So then what the differences that we observed was that जो normal rate of growth जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, basically अगर unemployment को नहीं बढ़ने देना है, right? So then you have to have a minimum rate of growth. Your output needs to keep on growing at, for the US it was 3%, which they have termed the normal rate of growth, which basically has to take care, the growth has to be there so that the additional people in the labor force are taken care of, and the reduced requirement of workers due to increased labor productivity, उसके वजह से कुछ workers redundant हो जाते हैं, तो उन redundant workers को वापस से मतलब engage रखने के लिए थोड़ा और output growth का requirement रहता है, ठीक है ना? So because of this we have a normal rate of growth, and then we had that, we saw that the relationship between this and unemployment is also not 1-for-1. पहली बात, जब growth होती है, आउटपुट बढ़ता है, तो 1-for-1 एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट जितना भी बढ़ता है उसके साथ 1-for-1 अनएम्प्लॉयमेंट घटता नहीं है. So both the reasons we discussed why this would be the case, and then we arrived at a generalized or the general form of the Okun's law, which was basically capturing the important characteristic के जो unemployment और output है, the difference in unemployment between previous period and this period, and the difference in output, or the difference in, or the gap, not exactly gap, but yeah, difference in output from the normal rate of growth. उसके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप 1-for-1 नहीं है, रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, लेकिन नेगेटिव है, right? So this coefficient over here, this is called the Okun's coefficient. This is Okun's coefficient, right? This is basically negative. All right. So this is where we stopped on this topic. Now let's talk about sacrifice ratio. क्या है? Sacrifice ratio Okun's law को, जो कि ये है, जो कि relationship है between unemployment and growth, इसमें unemployment को link बना के it links it with inflation, which is the Phillips curve. ठीक है? So Okun's law links, so sacrifice ratio
या ये जो हम रिलेशनशिप अभी देखने वाले हैं, दैट लिंक्स ओकन्स लॉ विथ द फिलिप्स कर्व. हाउ? ओकन्स लॉ क्या है? ये है, ठीक है. सो बेसिकली अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज इन आउटपुट. एंड फिलिप्स कर्व ये है. अभी फिलिप्स कर्व ये एग्जैक्टली नहीं है. What you will realize is that the LHS is same. So this is Phillips curve क्या था? The change in inflation from the last year. If this is, by ET and depending on the country, हम लोग usually ये मान रहे हैं कि by ET people just assume कि पिछले साल का inflation जो रहेगा वो ही रहेगा. So under this assumption, this is equal to some alpha minus alpha times UT minus UN होता था. But under again some assumptions हम इसको UT minus 1 लिख सकते हैं. Something that you don't need to worry too much about. Right? This is a very छोटा टॉपिक है, ये कभी आता है कभी नहीं आता. But this is मतलब going from UN to UT minus 1 will be a longish road. I don't want to go there. So this is what you will have, that the change in inflation. So basically if your unemployment went up from last year, your inflation is going to go down, right? So एक negative relationship. तो अब इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे, है ना, तो कंबाइन मतलब बिकॉज ऑफ दिस लिंक we can actually go from inflation to output, right? So from inflation or the rate of change of prices to the rate of change of output, which is growth rate. So from inflation to growth rate, and what we will realize that obviously it will be a positive relationship, है ना. So जब growth rate normal growth rate से ऊपर है तो inflation बढ़ेगा compared to last year, and when your growth rate is lower than the growth rate which is like the normal growth rate, तो inflation पिछले साल से कम रहेगा. ये relationship capture करेगा, right? So what will happen is sacrifice, and what another by it is it called sacrifice ratio. ये तो relationship हो गया, है ना. And what you will realize is, am I going too fast? I should go a bit slow क्योंकि ये कल cover नहीं हुआ था क्लास में. पहली चीज, ये जो हमको relationship मिला है, what you can do is you can write it as so pi t minus alpha times ut minus 1, और इसकी जगह हम ये लिख देते हैं. लिख सकते हैं. I have just replaced. We can write it like this, that pi t ऑलराइट. व्हाट, तो इसके दो काम करेंगे हम. पहली बात तो यू विल रियलाइज कि दिस इज नथिंग बट द सप्लाई फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व. जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व था वो कहाँ से आता था? वो प्राइस सेटिंग और वेट सेटिंग से आता था, है ना. जो प्रोडक्शन साइड था. सो प्राइस सेटिंग क्या था कि भाई गिवन अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज अ प्राइस, राइट. सॉरी, वेट सेटिंग. गिवन एन अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज अ प्राइस. The AS curve is what? Basically unemployment से लेकर employment और output तक का सफर. And then the weights, the AS curve was the relationship between price and output. ठीक. AS curve relationship between price and output. For a given level of output कितना price होगा, है ना. Price as a function of output, that was your AS. उसी चीज को यहाँ पर has been so your AS is price
एज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, वहां से यहां तक का सफर में दो चीजें हुई हैं। पहला तो वी हैव लुक्ड एट, इंस्टेड ऑफ लेवल्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेट्स, राइट। तो पहले तो चेंज नंबर 1, रेट्स instead of levels, right? And change number 2 is that we are basically looking at changes, change in rates, है ना। change या deviation वैसे देख रहे हैं। so change, or let's say change or deviation of rates instead of absolute numbers। हम्म, तो अभी क्या समझने वाली बात है, बेसिक रिलेशनशिप वही है एएस। ठीक है, एएस में ही हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ मैनिपुलेशन किया, मैथ मैनिपुलेशन, रेट लेकर आए, है ना। फिर एक बेसिक वो डिफाइन किया, एम्पिरिकल डेटा से हमने रियलाइज किया कि एक नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ होता है। फिर हमने एक और मतलब अजम्पशन एक्सपेक्टेशन वाला इंट्रोड्यूस किया। बट उसके अलावा हमने कोई और एडिशनल मॉडल में और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैथ मैनिपुलेशन किया, है ना। सो देन बेसिकली दिस इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग द एएस, हाँ, इन विच जो बेसिक वे था उसमें हम क्या करते थे, हम कहते थे कि प्राइस एक गिवन आउटपुट लेवल है, प्राइस उसके व्हाट विल बी द प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ दैट आउटपुट लेवल, एंड वी सॉ दैट फ्रॉम द सप्लायर साइड दिस विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ अब उसी चीज को हमने थोड़ा मैनिपुलेट करके वी गॉट टू दिस रिलेशनशिप वेयर वी आर लुकिंग एट नॉट लेवल्स बट रेट्स। सो रेट ऑफ प्राइस चेंज एंड द रेट ऑफ आउटपुट चेंज, दैट इज योर ग्रोथ रेट, एंड द प्राइस चेंज इज इन्फ्लेशन। और अब हम चेंज इन इन्फ्लेशन देख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ चेंज और डिफरेंस ऑफ आउटपुट ग्रोथ रेट फ्रॉम सम बेसिक लेवल। सो वहां से हम यहां पर पहुंचे। तो ऑब्वियसली जो इनहेरेंट रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट एंड इन्फ्लेशन, दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड बाय दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। और वो इनहेरेंट रिलेशनशिप क्या है, वो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। आउटपुट अगर ऊपर जाता है तो प्राइस भी ऊपर जाएगा। विच मीन्स कि अगर तुम एक दोनों को बेस लेवल से कंपेयर करोगे तो उस बेस लेवल पे अगर आउटपुट बेस लेवल से ऊपर है तो प्राइस भी उस बेस लेवल से, और इन सॉरी आउटपुट ग्रोथ अगर बेस लेवल से ऊपर है तो प्राइस ग्रोथ भी उस बेस लेवल से ऊपर होगा। दिस इज अनदर वे टू लुक एट द सप्लाई कर्व। समझ आइए बात। Which means growth rates or growth, if the growth is above the normal rate, it will be inflationary. Inflation हर साल बढ़ते जाएगा। If the growth rate is below, then it will be disinflationary. ठीक है, all right. Clear both of you? Tiyushka, Aditya, it's clear? Okay. The second point is the point of, good. Second point is the point of क्या था, sacrifice ratio, right? अभी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, सपोज के तुम्हारा इन्फ्लेशन जो है वो काफी हाई लेवल पे है ना। सो यू ऑब्जर्व के भाई 2025 में इन्फ्लेशन इज लाइक से आई डोंट नो 8%, राइट। एंड नाउ यू वांट टू गेट इट डाउन, राइट। सो यू वांट के जो सपोज अभी इन्फ्लेशन है पाई -1, मान लो 2024 की बात हम करें, तो अगर तुम्हें इन्फ्लेशन घटाना है ना, इफ यू वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन विच मीन्स दैट ये जो LHS है ये नेगेटिव होगा। If the inflation today has to be lower than the inflation yesterday, so this LHS term will be negative.
which means कि given the positive relationship, the RHS term also has to be negative, है ना? अब अल्फा बेटा तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि आउटपुट ग्रोथ रेट को कम होना पड़ेगा. And this is the essence of sacrifice ratio, which is basically saying that if you want to reduce inflation, the sacrifice ratio basically for any economy gives you that how much growth you have to sacrifice to get there. All right. So sacrifice ratio क्या है? ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे. Sacrificing growth rate required for desired decrease in inflation. है ना? और ये सारे वैल्यूज तो गिवन ही रहेंगे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इकोनॉमी जिसके शॉर्ट रन में ये चीजें चेंज नहीं होंगी, है ना? सो सैक्रिफाइस रेशियो इज, लिखा ही है मैंने, दोबारा क्यों लिखा? आई जस्ट पुट अ पर्पल स्टार ओवर हियर. ठीक है. सो देन दिस इज सेइंग दैट दिस इक्वेशन विल टेल यू, किसी भी इकोनॉमी के लिए यू विल हैव दैट वैल्यू ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट पता है तुम्हें, है ना? अल्फा पता है विच इज अनएम्प्लॉयमेंट और क्या नाम है, इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप. बेटा पता है अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ का रिलेशनशिप. तो कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में अगर ये सारी चीजें गिवन है, तो if you want, suppose this is the question that I gave and now we will solve it together, right? So suppose you have given values of beta, alpha, ये सारे मैंने वहीं से उठाया है जो यूएस वाला हमको मिला हुआ है, ठीक है ना? And the natural rate of growth is 3%. So then if you want inflation reduction by 5%, right? So हमने वो किया था ना that so they were running at inflation levels of, let's make it 6% because that was their actual target, right? So 10% से उनको 4% पे लाना था. So the inflation reduction target was 6%. So now let's see कि कितना output growth में sacrifice लगता इसको लाने के लिए. Can you try and solve it now? Equation तुम्हारे सामने है. अभी तो ये भी कर लिया. Remember pi t minus 1 जो LHS है वो -6 होगा. हो गया? This is the relationship that we have, right? Let me know if you are doing it. कि मैं ऐसे ही wait कर रही हूँ. Doing it now. हाँ, हो गया? कितना आया? -6 is equal to alpha. Alpha was 0.55 into 0.4. How much is this? Final answer is at 2.42. ये कितना है? 0.55 into 0.4. 0.22. 0.22. And 6 upon 27.27.
यही है। Ma'am, we had GYN as 3%, so हाँ ठीक है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट, 22 कुछ आएगा नहीं, सॉरी 20 कितना है, 3%, सो 24 समथिंग। आई टेल यू व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। ये कैलकुलेशन सही है ना, ये पूछ रहे हैं। ma'am, I didn't do it this way. I opened the bracket first and then I did the calculation. So भाई 1.55 into 0.4, या दैट्स फाइन। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्यों ऐसे, मतलब व्हाई हैव आई रिटन लाइक दिस। व्हाट इज योर आंसर बाय द वे? व्हाट इज योर आंसर? ma'am, I'm getting आदित्य, किया तुमने? क्या आया आंसर? ये आया? यही आ रहा है? हाँ पीयूष का, व्हाट वाज योर आंसर? आई होप इट वाज दिस। ma'am, it was 2.4 something, maybe decimal, because if I shift the decimal, it would be 24 something, which is equal to 27 minus 3. ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, either is correct, right? 0.2727 and 27.7% is the same thing, right? Okay, so now let's see what this means. Why have I written it like this? We can also write it GY minus भी कर सकते हैं, बट हमारा मेन पॉइंट वो नहीं है। मेन पॉइंट ये समझना है कि अगर तो जो जैसा हाल था इन 1979, राइट, दे हैड अ वेरी हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग ऑन। ऑयल प्राइसेस हटा भी दो तब भी 10% चल रहा था। So they have wanted to bring it down to 4%, and they said that 6% का इन्फ्लेशन, मतलब 6 percentage points से इन्फ्लेशन को घटाना है। What this would mean, what this would mean when translated into the fall in output growth rate, this would mean कि जो normal growth rate है, जो कि 3% है या जो भी है, whatever is the normal rate of growth, उसके कंपैरिजन में your output or the difference has to be 27%। तुम्हारा आउटपुट ग्रोथ 27 परसेंटेज पॉइंट से, ये परसेंटेज पॉइंट्स है बाय द वे, 27 परसेंटेज पॉइंट से गिरना पड़ेगा, विच मीन्स अ ह्यूज मतलब रिसेशन आ जाएगा तुम्हारी इकोनॉमी में। हाँ, दिस इज व्हेन यू ट्राई टू डू इट इन 1 ईयर, जो हमारा वो वाला भी केस था, राइट? सो व्हेन वी वर सेइंग कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटाना है, मतलब सॉरी इन्फ्लेशन घटाना है, तो दिस इज हाउ मच द कॉस्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड व्हेन यू कन्वर्ट दैट इनटू द कॉस्ट इन आउटपुट ग्रोथ रेट, this is how much the cost will be in output growth rate. And if you want to do it in 1 year, look at the like severity of the recession that it will cause, right? So then the argument was, so again coming back to the point that we discussed earlier, दो किस्म के लोग थे। एक कह रहे थे कि अगर इतना भारी रिसेशन आने वाला है, if this is if this will be the sacrifice for reducing inflation, then we should go with a gradual reduction. Every year you keep on reducing a bit, इसको तुम maybe spread it out across 5 years, and then there will be a lower reduction or lower, like a moderate recession in every year, rather than something like this which will like potentially push the economy into depression, है ना? सिर्फ recession नहीं, depression तक भी बात जा सकती है। This is a huge change they're asking for. This is a huge sacrifice, right? So then the argument was that given that this is the cost, this is the sacrifice, go slow. And of course, then there was the Lucas critique, and there was these Phelps who took it to the next level, in which he was saying, मतलब sorry, not Phelps, Sargent, right? Thomas Sargent. So Thomas Sargent was saying कि नहीं, मतलब expectations बिल्कुल ही बदल जाएंगे and कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, which of course did not turn out to be true. Truth was somewhere in between.
because the way things were executed were also neither here nor there. So they started with a very huge contraction, but उसके बाद गवर्नर also back down, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही साल में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी. तो then he went back and forth, and then whatever happened we discussed already. But this is the idea of sacrifice ratio, and this लेड सम इकोनॉमिस्ट. ये उसी चीज का मतलब, ये कोई अलग एनालिसिस नहीं है. इट इज जस्ट कि जब ये डिस्कशन चल रहा होगा तो ये दोनों चीजें ही साथ में एनालाइज हो रही हैं. अब वो बात है कि ब्लैंचर्ड ने बुक में अलग अलग करके बताया है, और डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट ऑर्डर में है. बट अब हमको पता है कि ये बात सेम चीज की हो रही है और सेम टाइम पे ये सारी बातें हो रही है. तो ये हो रहा होगा, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है कि अगर you want this reduction in inflation, it will be very costly for the labor force. It will be very costly in terms of unemployment. It will be very costly in terms of output, obviously. And then let's go slow, right? And then the other argument was that matlab, people's expectations will change. Why will it keep on being by t-1? तो जब वो change होगा, and if your policy is credible, तो इतना cost नहीं होगा. So that debate we have already discussed. This is just another, or you can say that an additional feature, or the complete picture of that debate. So we stopped at unemployment, but unemployment, obviously, apart from being costly to the people, unemployment is obviously directly linked to output levels. So this is the full picture. ठीक है ना? So this means that there were again two the suggestions. So policy implication. One of the policy implications was to go slow, right? And other was to go fast, because expectation formation will change. So I'm just writing this. I'm not explaining everything again. वो हम डिस्कस कर चुके हैं. जब तुम इसको लिखोगे तो कभी एग्जाम में अगर लिखना पड़ जाए तो ये दोनों पॉइंट साथ में लिखना. समझने के लिए हमने इसको 2 स्टेप में समझा है, बट अल्टीमेटली इट इज द सेम पॉइंट, राइट? तो विल राइट इट टुगेदर कि भाई ये इन्फ्लेशन की ऐसी हालत थी, उसको घटाने से अनएम्प्लॉयमेंट में इतना कॉस्टली होता. Using the sacrifice ratio, this would mean that it would have been this much costly for output growth rate, right? And then there were these two policy suggestions that were made, which were basically differed based on कि expectation कैसे form करते हैं, उसके बारे में क्या belief था. Cool? Okay, good. यहाँ पे एक term I want to introduce for this people. These were, so देखो, जब अभी हमने कल बात करना शुरू किया था, यहाँ तक हम वहां पे फेज पे पहुंच गए थे जब ये रियलाइज होने लग गया लोगों को कि मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है ना? ऐसी फालतू में, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट रेट पैक करके मनी सप्लाई को इधर उधर नहीं भेजा जा सकता, राइट? सो यू हैव टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. So obviously there was a huge influence of monetarists already happening in this era, right? And this category of monetarists, these were called gradual monetarists. So these are the guys who obviously both these categories, चाहे वो शुरू पहले वाला पॉलिसी सजेशन हो या नीचे वाला हो, दोनों का था कि हाँ मॉनेटरी पॉलिसी से हैंडल करना है और मनी सप्लाई बिल्कुल ही उड़ रहा है. इन्फ्लेशन की हालत देखो, तो मनी सप्लाई कंट्रोल करना है. तो मॉनेटरिस्ट दोनों थे, ठीक है? ये वाले थे ग्रेजुअल मॉनेटरिस्ट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स दे रेकमेंडेड, दे बिलीव दैट द स्टेप्स शुड बी टेकन स्लोली, अदरवाइज द इकोनॉमी विल बी पुश्ड इनटू अ रिसेशन, राइट? वेरी डीप रिसेशन. एंड ये जो अदर थे ना, ये वो थे जिन्होंने बेसिकली एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन को टारगेट किया, और ये मॉनेटरिस्ट्स से इवॉल्व होके ये बन गए न्यू क्लासिकल्स. ये बन गए
जो हमारे रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल के फाउंडिंग इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है। सो दोनों मॉनेटरिज्म से ही निकले, है ना। दोनों को ये दिखने लग गया था कि भाई केनेजियन पॉलिसी जो है वहां पे थोड़ा झोल चल रहा है, इट्स टू मच डिस्क्रिशन, स्पेशली फॉर मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो देन बोथ ऑफ देम स्टार्टेड कि हाँ भाई, फ्रीडमैन के व्यू से अग्री करते थे, फेल्प्स के व्यू से अग्री करते थे, बट ये दो चेन में डिवाइड हुए। एक बने ग्रेजुअल मॉनेटरिस्ट्स और दूसरे बन गए these other class were basically attacking the expectation formation theory, right? So these guys became the new classicals जो basically rational expectation model पे काम करते थे, right? So these the other you can say that evolved into new classicals. अभी हमने किया नहीं है, ये करेंगे अभी, बट मैं बता रही हूँ कि कैसे evolution हुआ। Expectations model. All right, ये कहानी समझ में आई? ओके, तो ये जो कहानी है अब इसके बारे में दिस इज अ गुड पॉइंट टू लर्न मोर अबाउट मॉनेटरिस्ट्स बिकॉज दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिसी सर्कल्स एट दैट टाइम। और उसके बाद उसी का एवोल्यूशन होके यू आल्सो गॉट टू द न्यू क्लासिकल्स, राइट? सो लेट्स डू दैट नाउ। ओके, सो कुछ कहानी तो मैंने कल सुनाई थी, है ना। आई जस्ट गो ओवर इट ब्रीफली। ऑलराइट, तो 1979 के खैर बहुत पहले से ही issues with the Keynesian system started coming up, as I said. So early जो Keynesians थे, जो मतलब early मतलब Keynes plus ISLM तक, है ना। So these guys were more about, of course, in theory, they were always about monetary policy plus fiscal policy, और बहुत ज्यादा एलिमेंट था डिस्क्रिशन का, है ना। सो जब जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से तुम चूज करो कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी लगाना है, फिस्कल पॉलिसी लगाना है, कैसे लगाना है। द थ्योरी इटसेल्फ अलाउज फॉर दिस डिस्क्रिशन, राइट? सो इन द थ्योरी देयर इज नो policy prescription about using a particular policy in a particular situation, right? You have multiple options. This is something that we will do जब मनी और बैंकिंग करेंगे। तो उसमें सपोज अगर तुम एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां पे यू वांट टू टारगेट इन्फ्लेशन एंड यू वांट टू आल्सो टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ऐसा सिचुएशन है, तो तुम यू कैन गो फॉर fiscal policy or monetary policy or some combination, and most likely you will hit some target, you will miss some target, ठीक है। सो देन दिस बेसिकली अलाउड, थ्योरी के तरफ से कोई रूल नहीं था कि किस सिचुएशन में क्या करना है, विच वॉज बेसिकली दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक। सो फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू अर्ली केनेजियंस में द पॉइंट वाज दैट लेट्स कंबाइन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डिपेंडिंग अपॉन के क्या सिचुएशन है, राइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंड दिस गेव बर्थ टू government policy, including government plus the monetary authority, a lot of discretion, ठीक। ये था इनका थ्योरी। थ्योरी में ये दिक्कत थी कि कहीं कोई रूल नहीं था। रियलिटी में क्या बात थी? रियलिटी बात ये थी दैट दे रियलाइज्ड द सिचुएशन इन विच द time frame, the context in which these Keynesian revolution happened was
a time where monetary policy was not very effective. So that was a fact. और उसका रीजन ये था कि तुम्हारा LM बहुत ही फ्लैट जोन में था, लिक्विडिटी मतलब इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थे, तो सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में हम थे, हम नहीं थे, वो लोग थे। सो लिक्विडिटी ट्रैप वाला सिचुएशन था, ठीक है ना। इधर कहीं थे, बहुत ही लो LM की हालत चल रही थी, और जो IES था वो काफी स्टीप था, क्योंकि the interest was not very sensitive to interest rate. Sorry, investment was not very sensitive to interest rate. The reason is कि बहुत ज़्यादा excess capacity था, तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं रुका हुआ था कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, वो ऑलरेडी बहुत लो थे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इसलिए रुका हुआ था क्योंकि डिमांड ही नहीं थी. इट वॉज अ डिमांड डेफिशिएंट इकोनॉमी दैट दे वर डीलिंग विद. सो देन इस केस में वी ऑलरेडी सॉ दैट व्हाट विल हैपन इज के अगर क्या नाम है LM कर्व मतलब मॉनेटरी पॉलिसी लगाओगे और LM को शिफ्ट करोगे तो हार्डली आउटपुट में कोई फर्क दिखेगा, और इंटरेस्ट रेट बहुत डिप भी हो जाएगा, जितना भी ऑलरेडी लो है कितना ही लो जाएगा, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट हिलेगा, है ना। इफ यू मूव मनी सप्लाई, ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट्स टू bring money market back into equilibrium, right? So if you are adjusting, or if you want to target monetary money supply, you will have to move the interest rate to bring the system back to equilibrium, ठीक है ना। सो देन द सेकेंड पॉइंट वाज, एक तो पहली बात की मॉनेटरी पॉलिसी उनके टाइम में इफेक्टिव नहीं हो रही थी, और दूसरा पॉइंट ये था कि उनका ये बिलीव था, द केनेशियंस बिलीव्ड दैट मनी डिमांड इज वेरी वॉलेटाइल, क्योंकि उनका मनी डिमांड क्या था, उनका मनी डिमांड वाज कंप्राइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस डिमांड एंड स्पेक्युलेटेड, राइट। एंड स्पेक्युलेटेड डिमांड इज बिकम्स मोर एंड मोर वॉलेटाइल द लोअर द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जैसे ही थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एकदम ही स्पेक्युलेटेड डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक, उनका थ्योरी ये कहता है। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी लो थे, इसका मतलब कि मनी डिमांड बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था, तो ये लोग ये चाह रहे थे कि मनी सप्लाई को ना टारगेट किया जाए, इंटरेस्ट रेट को टारगेट किया जाए। अगर थोड़ा बहुत भी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग से याद हो, सो व्हाट यू कैन डू एज अ सेंट्रल बैंक, यू कैन ओनली टारगेट वन ऑफ दीज, एंड द रीजन इज वेरी इंट्यूटिव। अभी तक हमने जब LM को शिफ्ट किया तो हम क्या करते थे, हम मनी सप्लाई बढ़ाते थे, है ना, एक टारगेट मनी टारगेट हिट करते थे, और एडजस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट को छोड़ देते थे, जैसे इंटरेस्ट रेट एडजस्ट हो, यू कैन नॉट कंट्रोल इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट ना, इफ यू वांट टू टारगेट मनी सप्लाई। इसका उल्टा का क्या मतलब है, अगर तुमने इंटरेस्ट रेट टारगेट करना है, अगर तुम चाह रहे हो कि इंटरेस्ट रेट यही मेंटेन रहे, तो फिर तुमको मनी सप्लाई यू हैव टू लेट इट गो, राइट, है ना। सो इफ यू वांट कि इंटरेस्ट रेट जो है मेरा इस लेवल पे 5% पे 4% पे फिक्स है, अब सपोज ड्यू टू सम रीजन अगर आउटपुट बढ़ा या आउटपुट घट रहा है, उस वजह से मनी डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, मान लो, है ना, इंटरेस्ट रेट इज सपोज 4%, यू वांट इंटरेस्ट रेट टू बी 4% टू फिक्स इट। नाउ सपोज मनी डिमांड इंक्रीजेस, है ना, मनी डिमांड इंक्रीज हुआ तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई इन दी मनी मार्केट। अब ये को मैच करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर मनी सप्लाई चेंज नहीं हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को तुमको नहीं बढ़ाना है, इफ दैट इज योर टारगेट, तो हाउ विल यू ब्रिंग द मनी मार्केट इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ हायर डिमांड देन सप्लाई, यू हैव टू सप्लाई द मनी, तो मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट को अगर तुमने पेग करना है, इसको बोलते हैं पेग करना, फिक्स करने, तो अगर तुमको इंटरेस्ट रेट को पेग करना है तो तुमको मनी सप्लाई जिधर भी मतलब जैसे भी डिमांड आ रही है, यू हैव टू जस्ट गिव दैट, राइट। एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो क्या आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहला थ्योरी की तरफ से कोई रूल नहीं था, थ्योरी की तरफ से आप अपने हिसाब से आप करिए जो भी कर सकते हैं। दूसरा, इनको पता था उस टाइम पे ऐसा था कि जो है LM is very flat, IS is very steep, right? So this said that money supply को ऊपर नीचे करने से हमें कोई खास आउटपुट में फर्क नहीं दिख रहा है। हो क्या रहा है कि मनी सप्लाई को टारगेट करने से इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी का प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी से हमारा जो मनी डिमांड है वो बहुत वॉलेटाइल हो रहा है ना, दैट इज समथिंग वी डोंट वांट, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी में देन यू टारगेट इंटरेस्ट रेट और तुम मनी सप्लाई छोड़ दो,
उसके ऊपर नीचे होने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. लुक एट दिस ग्राफ, राइट? सो लेट द मनी सप्लाई टेक इट्स ओन कोर्स. लेट मी टारगेट इंटरेस्ट रेट, जिसका एक एडिशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी रीजन भी था, क्योंकि वो वॉर टाइम था. उस टाइम पे द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है. मतलब जनता से तुम उधार लोगे, यू विल बोरो फ्रॉम द पब्लिक, एंड इफ यू वांट टू बोरो यू वांट टू कीप द इंटरेस्ट पेमेंट लो. वो कैसे होगा? लो इंटरेस्ट रेट्स. So because of all low and stable interest rate, so you want low interest rate and you want stable interest rate. और ये कब होगा? जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फिस्कल पॉलिसी के साथ टैंडम में काम करेगी. फिस्कल पॉलिसी खर्चा करेगी, है ना? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी विल इंक्रीज, इट्स वॉर टाइम इकोनॉमी. फिस्कल पॉलिसी खर्चा करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी जितना खर्चा हो उतना पैसा जनरेट करेगी, so that interest rates do not move. So basically accommodative monetary policy, which is just letting the money supply go everywhere. हाँ, बस इंटरेस्ट रेट मेरा ठीक रहे, कम रहे, स्टेबल रहे. समझ आया किस्सा क्या चल रहा था? Right? So this is the scenario. So you had a very volatile money supply and a lot of discretion in the money supply वाला part. तो अब यहाँ से भाई चीजें, मतलब ऑब्वियसली एक एक टाइम के बाद जब तुम्हारे बेस सिचुएशंस बदल जाएंगे, है ना? अगर पॉलिसी उसको रिस्पॉन्स में नहीं बदलती है तो दिक्कत आएगी. बेस सिचुएशन क्या था? फ्लैट एलएम, स्टीप आईएस, वॉर टाइम इकोनॉमी. ठीक है, ये बेस सिचुएशन में ये चीजें काम कर रही थी. बट बेस सिचुएशन बदला. कैसे बदला? अम, आह, such a confusing weather बाबा. समझ ही नहीं आता क्या, किस तरीके से टैकल करें. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर नॉट इल, और कुछ सर्दी जुकाम नहीं है. प्लीज टेक केयर. बीमार पड़ने से बहुत टाइम लॉस हो जाता है. एंड द काइंड ऑफ viral and all that goes around these days, it is much more damaging than it used to be. So even after you've recovered, it like sort of drains you. The weakness doesn't go for a long time, so be very careful. ठीक है? हाँ. तो अभी क्या था? ये जो तीन सिचुएशंस थे, जो कॉन्टेक्स्ट था वो कॉन्टेक्स्ट बदलने लग गया. क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट, मतलब मनी जो जब इकोनॉमी इंप्रूव होने लग गई, है ना, तो तब इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ने लग गया, है ना? एक टाइम के बाद तो योर एक्सेस सप्लाई, सॉरी एक्सेस कैपेसिटी जो है वो कम होने लग गई ना. सो अब नहीं है ऐसा ऐसा हाल नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी है. उसके बाद तो इंटरेस्ट रेट को रिस्पॉन्ड करेगा इन्वेस्टमेंट, है ना? सो योर आईएस स्टार्टेड टू फ्लैटन आउट. योर एलएम ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम स्टीपर. या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि LM was probably never that flat to begin with. You know, so this was a belief with which the Keynesians were working, but probably it was not that flat. Probably the speculative demand वो इतनी भी volatile नहीं थी. ठीक. And thirdly, of course, wartime economy नहीं थी. It wasn't a wartime economy anymore. So then there was a situation in which, because of this, you know, pegging of interest rate and this unchecked growth of money supply, क्या हो रहा है? जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, अभी क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा ना. तो अब तुमने ठान रखी है कि नहीं हमको इंटरेस्ट रेट लो रखना है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ही. मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, है ना? तुम केनेडियन सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि प्राइसेस नहीं मूव करेंगे, बट फिर करेंगे ना. शॉर्ट टर्म में नहीं करेंगे, फिर मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में करेंगे, और फिर वो करने लग गए. एंड देन तुम्हारे जो मनी सप्लाई था वो जैसे तुम भूल चुके हो उसको, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया. तो यू लैंड इन अ सिचुएशन वेयर इवन आफ्टर यू टेक अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस यू आर एट 10% इन्फ्लेशन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट? सो ये रीजन था जहां पे तुम एक आउटडेटेड पॉलिसी रेजीम में चल रहे हो, इवन व्हेन द पॉलिसीज, द अंडरलाइंग सिचुएशंस हैव चेंज्ड, राइट? सो जिस चीज को क्लासिकल्स, द ट्रैप इनटू व्हिच द क्लासिकल्स फेल वाज द ट्रैप इनटू व्हिच द Keynesians also ultimately fell, है ना? तो तब इस Keynesian रेवोल्यूशन के अगेंस्ट आया
monetarist counter revolution. Yeah, so which was basically saying कि नहीं भाई, मनी सप्लाई को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, सो यू हैव टू रीअसर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, विच बेसिकली मेंट मनी सप्लाई, क्योंकि इंटरेस्ट टारगेटिंग भी एक मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन इंटरेस्ट टारगेटिंग इसीलिए मतलब इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि द रीजन फॉर इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग वाज बेसिकली ओवर हियर टू अकोमोडेट द फिस्कल एक्सपेंडिचर्स, फिस्कल पॉलिसी अकोमोडेट करने के लिए, है ना. सो देन what they said was that money supply is too important to be discretionary. ये आइडिया था उसका कि ऐसे नहीं चलेगा एक तरीके से, और बेसिकली रूल बेस्ड होना चाहिए, एंड दैट स्पेशली मेंट के फिस्कल पॉलिसी के पीछे पीछे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चलेगी. देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंस एटलीस्ट टू अ वेरी लार्ज डिग्री बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक. ठीक है ना. तो यही रूट्स हैं, ये मतलब लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉनेटरी अथॉरिटी इंडिपेंडेंस दैट वी सी टुडे. ओके, सो दिस वाज, आई मीन, मॉनेटरिस्ट्स वेंट टू फार, वो बिल्कुल ही ज्यादा ही रूल्स में चले गए थे, बट उसका सॉफ्टवेयर वर्जन हम आज देखते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द केनेशियंस वाज दैट कि नहीं, मनी सप्लाई इज इम्पोर्टेंट. वी आर नॉट दैट, मतलब जो फ्लैट एल एम स्टीप IS वाले में नहीं है हम, है ना, या तो सिचुएशन चेंज हो गई है या तो इट वाज नेवर दैट. सो वट एवर बी द केस, we cannot, so money supply is not that what do you say, inconsequential. ठीक. So the main thing ki reassert the importance of money supply, of monetary policy, and make it rule based, remove the discretion. ये biggest disagreement है monetarists का Keynesian से. ठीक. And the second point is that money demand is quite stable. So तुम जो interest targeting में लगे हुए हो कि इंटरेस्ट ज्यादा मूव करेगा तो मनी डिमांड बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करेगा, इतना कुछ है नहीं. मनी डिमांड का मेन रिस्पॉन्स आता है आउटपुट से, राइट. तो अगर तुम्हारे इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग से मनी डिमांड नहीं मूव कर रहा होता तो तुम्हारा इन्फ्लेशन इतना क्यों ही बढ़ता, राइट. सो व्हाट दे वर सेइंग दैट तुम्हारा क्या एम था, दैट यू कीप द मनी डिमांड स्टेबल, राइट, एंड देन बेसिकली द मनी मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम. और उसका मतलब क्या है कि अगर मनी डिमांड स्टेबल है तो उसको मैच करने के लिए मनी सप्लाई विल नॉट हैव टू गो हेवायर, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग. तो इसका मतलब क्या है कि मनी डिमांड इंटरेस्ट पे इतना नहीं डिपेंड कर रहा है, वो आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है. तो जो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड है वो उतनी हाई नहीं है, हमारा LM एक्चुअली इतना फ्लैट नहीं है. समझ आइए बात. कहीं नहीं समझ आया तो मेरे को रोकना, ठीक है ना. राइट. सो देन दे सेड दैट मनी डिमांड इज नॉट दैट वॉलेटाइल. सो प्लीज इंटरेस्ट रेट के पीछे इतना हाथ धो के मत पड़ जाओ. तुम्हें यू हैव टू टेक केयर ऑफ मनी सप्लाई, तुम्हारा इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है. ठीक. द सेकंड पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट वाज दैट द मनी डिमांड इज क्वाइट स्टेबल, प्लीज. And the third thing is actually a point of agreement, right? So monetarists was not just saying the same thing as the classicals were saying. They were also improving upon the classical proposition. And they said, no, I agree. So we are saying that money demand is stable, but we are not denying the fact that money demand does not depend on interest rate. है ना. सो हम मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, हम बस ये नहीं मान रहे कि इतना ज्यादा सेंसिटिविटी है उसका. ठीक है. सो मनी डज हैव, एंड द रीजन इज क्योंकि मनी हैज यूजेस अदर देन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट, है ना. सो मनी को एसेट की तरह भी देखते हैं, और money demand does depend on interest rate, but the sensitivity is not that high. So this basically is saying that according to monetarists, money demand does depend on interest rates, but the sensitivity is low. Right. So इस बीच से होकर then their theory started. So the basic starting point of monetarism was this theory of money demand. तो उन्होंने जो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी था उसको फिर रिवाइज किया, उसमें Keynesian वाला अच्छा पॉइंट डाला,
कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी होगा, और फिर उसको लेके एक नया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच इज कॉल्ड द रीस्टेटमेंट ऑफ द QTM जो दिया, विच इज नाउ टारगेटिंग, विच इज नाउ एबल टू गिव एन आंसर के लो सेंसिटिविटी है, शॉर्ट रन में अफेक्ट होगा आउटपुट पे मॉनेटरी पॉलिसी का, और जो है मीडियम रन में, लॉन्ग रन में सारा का सारा प्राइस में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी विल डू नाउ फॉर दी मोनेटरिज्म। तो मोनेटरिज्म में बेसिकली हमको ये समझने की, दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला कि उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कैसे मॉडिफाई किया, और दूसरा ये कि उनका मेन जो टेनेट था वो ये था कि डिस्क्रिशन बेस्ड नहीं, रूल बेस्ड मनी सप्लाई होना चाहिए, बिकॉज इट इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट अलोन। टू इम्पोर्टेंट मतलब बेसिकली वो प्राइस को अफेक्ट करता है ना? तो मीडियम टर्म में तुम मनी सप्लाई को अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो तुम्हारा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो ये है कहानी। Alright, so let's take a 5-minute break right now and we'll return with doing the theory. Let me know अगर कोई question है। Keynesian में जो है वो, मतलब सॉरी, फ्रॉयन में he talks about the same things, but थोड़ा सा कहानी का फ्लो वैसा नहीं है, या फिर थोड़ा कभी लैंग्वेज वो है। So keep this कहानी in your mind and then read it, you will be able to understand it better. Okay? Okay. So now that the context is clear, let's start with द बेसिक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हम फिर से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो QTM था क्लासिकल वाला, उसको एक बार देख लेते हैं। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स दैट वी विल टॉक अबाउट, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, which is the classical QTM. ठीक, सो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या था? इट वाज सिंपली दिस, दैट द MV is equal to PY, where this was the मनी सप्लाई, ठीक है, और ये था वेलोसिटी, और ये हो गया नॉमिनल इनकम, है ना? राइट, और what why this was used as a theory of aggregate demand, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कहा था कि दो चीजें यहाँ पे गिवन है ना? सो हमने क्या कहा था कि ये जो नॉमिनल, सॉरी, जो ये y है आउट ऑफ दिस, जो स्पेशली y है, दिस इज डिटरमिन्ड आउटसाइड दिस सिस्टम। इसका डिटर्मिनेशन मनी मार्केट में नहीं होता है ना? सो दिस इज डिटरमिन्ड बाय रियल फैक्टर्स, not affected by whatever variables are over here, है ना? So money supply, velocity, price, इन सबसे ये decision नहीं होता है. It is determined by real factors outside this system, right? And जो ये velocity था, this was assumed to be constant in the short run, है ना? So जो भी टाइम पीरियड है इन विच यू आर लुकिंग एट थिंग्स, वहाँ पे यू कैन जस्ट सेफली से कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है? एंड देन दिस वाज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक? सो नाउ द आइडिया वाज दैट गिवन दिस थिंग, मनी सप्लाई बेसिकली 1-on-1 ट्रांसलेट हो जा रहा था प्राइस में, है ना? विच ऑल्सो मेंट कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई की वजह से ही बढ़ रहा है, ऑलराइट? एंड इफ यू लुक एट नॉमिनल इनकम, सो अनदर वे टू से इज दैट मनी is directly proportional to P, right? Which implies that the money supply कर लो, money supply is directly proportional to PY, क्योंकि Y तो हमारे सिस्टम में exogenous है अभी, है ना?
And this implies that given that, one second. Given that V is constant, only money supply can change the nominal income. राइट सो और किसी भी फैक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड दिस वाज ऑफ कोर्स अंडर द अजम्पशन के आउटपुट पे डिमांड का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो ऑब्वियसली किनीजियंस क्लियरली शोड के ऐसा नहीं है सो मॉनिटरिस्ट्स वर नॉट गोइंग टू चैलेंज दैट राइट सो दे वर नॉट सेइंग के शॉर्ट रन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऑफ कोर्स दे सेड के शॉर्ट रन में फर्क पड़ेगा और उसका रीजन ये है कि जो भी प्राइसेस हैं वो इतना मूव नहीं करती हैं है ना सो आउटपुट डज रिस्पॉन्ड टू डिमांड और ये वाला चीज जो पूरा वर्कआउट होके आता है वो मनी मार्केट से ही वर्कआउट होके आता है क्योंकि इंटरेस्ट ऊपर नीचे करता है और मनी डिमांड इंटरेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है ठीक ऑलराइट सो नाउ दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट तो इसके बाद कीन्स ने क्या कहा सो लेट्स लुक एट व्हाट Keynes said. The second is Keynes money demand. राइट सो कीन्स के केस में जो ये मनी डिमांड कॉल इट सो ये जो वेलोसिटी था आई कैन राइट इट हियर ओनली वेलोसिटी क्या था वेलोसिटी वाज यू कैन से 1/k था या वेलोसिटी के टर्म्स में ही काम कर सकते हैं राइट सो what you will realize is that in Keynes model velocity was not constant. We have not looked at the Keynes model in this light. Abhi we will see. It is not constant. It is not exogenous. It is determined within the system endogenously. है ना? And it changes due to changes in monetary and fiscal policy. Let's see how. Suppose के expansionary fiscal होता है, right? So you have an expansionary fiscal policy. What is the effect? IES shifts out, right? So let's consider this case. Let's see how the velocity changes. V कैसे change होता है? So for example, G increases, है ना? Expansionary fiscal. तो क्या सीन होता है इधर? ISLM के केस में है तो obviously the basic assumption is कि prices short run में नहीं move हो रहे हैं, है ना? So IS shift हुआ है ना and the final result is this is the new equilibrium where your Y is higher along with the interest rate है ना now we are saying that G increases and the money supply is same ऐसा केस है ठीक है अभी हम कीन्स की बात कर रहे हैं अभी कंफ्यूज मत करना कि हमने क्या कहा कि क्या पॉलिसी अप्लाई हो रही थी वे सेइंग दैट इन द नॉर्मल सिस्टम हम क्या कहते हैं कि जी इंक्रीज हुआ है तो ऐसा इक्वेशन होगा ऐसा एडजस्टमेंट होगा ओके ऐसा एडजस्टमेंट होगा वेयर योर आउटपुट विल इंक्रीज एंड योर इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज तो अब क्या सीन है कि सपोज ये जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है
जब आउटपुट इंक्रीज हुआ तो मनी डिमांड इंक्रीज होगा ना। ये तो दोनों ही बातें, दोनों ही पार्टी मान रही है। जब हम वो कैम्ब्रिज वाला फंक्शन देखते हैं, मनी डिमांड इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम। जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो मनी डिमांड इंक्रीज होगा। अब अगर मनी सप्लाई फिक्स है ना, तो मनी सप्लाई जब फिक्स है तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है, ताकि ये डिमांड को वापस से लाया जा सके। सो सम मनी डिमांड जो इंक्रीज हुआ है वो वापस से कम हो जाए, ठीक है। बट व्हाट यू विल रियलाइज इज कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो उस इंक्रीज्ड आउटपुट के लिए ट्रांजैक्शंस भी तो चल रहे होंगे ना। ठीक है, मनी डिमांड भी मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, सो मनी डिमांड थोड़ा कम हो गया है, राइट। बट ओवरऑल आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सेम मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इज द सेम मनी सप्लाई इज नाउ हैंडलिंग हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आउटपुट बढ़ा है का क्या मतलब है कि आउटपुट के मतलब ये तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है ना, सो एडी इज इक्वल टू वाई नाउ। तो जितना आउटपुट है उतना डिमांड भी है, मतलब वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड। Sorry. Yeah. So then what we have is that definitely there is a higher amount of output going around, which of course demand is also matching because we are talking about a new equilibrium point. So इस new equilibrium point पे higher number of transactions हो रहे हैं PY, क्योंकि P fix है ना, और मनी सप्लाई सेम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उतने ही पैसे में ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसका मतलब कि वेलोसिटी हायर है ना। सेम पैसे में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने का मतलब है कि सेम पैसा ज्यादा बारी घूम रहा है, ज्यादा वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज बीइंग डिटरमिन्ड विद इन द सिस्टम। इफ यू हैव एन एक्सपेंशनरी फिस्कल, यू सी दैट वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड। आउटपुट बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मनी सप्लाई सेम है, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। So velocity is not something that is, given exogenously. Prices, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि प्राइसेस तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो जब प्राइसेस तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो योर आउटपुट विल इंक्रीज, राइट। आउटपुट जब इंक्रीज होगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन मनी सप्लाई तो उतना ही है। तो उस केस में योर वेलोसिटी विल हैव टू इंक्रीज टू टेक केयर ऑफ दैट एडिशनल मनी डिमांड, right? So this means what? Higher P Y, right? With the same money supply, which implies that we must have gone up. समझ आई ये बात? So what we are seeing is that now we will basically look at how velocity is related with interest rate, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि मनी का जो वेलोसिटी है वो इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है।
क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड. इट मीन्स दैट सो हायर P with the same MS and higher I, interest rate भी बढ़ा है, right? So which means what, that velocity is directly proportional to interest rate. और क्यों ऐसा होगा सोच के देखो लॉजिकली. अगर सपोज इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है ना, भूल, ये तो मतलब ये तो बात करने के लिए है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल हुआ इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए हमको दिखाना पड़ा कि इंटरेस्ट रेट इस वजह से ऊपर गया ना. सपोज इंटरेस्ट रेट ऐसे ही ऊपर जाता है ड्यू टू सम रीजन, तो क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो people will start moving to bonds, right? The amount of money in the system will go down. लेकिन अगर आउटपुट उतना ही है ना, और प्राइस उतना ही है, तो उतने आउटपुट के लिए सेम पैसे को ज्यादा सर्कुलेट होना पड़ेगा. मार्केट में मनी घट जाएगा, कैश घट जाएगा. ठीक है. अगर ये मतलब घटा हुआ कैश सिस्टम से अगर सॉरी घटा हुआ कैश अगर सेंट्रल बैंक के तरफ से वापस नहीं इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम मनी हैज टू सर्कुलेट मोर, वेलोसिटी विल गो अप. सो बेसिकली द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, लोग कैश कम कर देंगे, कम कैश को सेम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करने हैं, वेलोसिटी विल हैव टू इंक्रीज. राइट. ये कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब अगर प्राइस भी नीचे आ जाए. तो प्राइस कम ही हो गया तो फिर सेम ही बात होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नहीं होगा. क्योंकि लोग मनी को एज एसेट भी देखते हैं, विच वॉज समथिंग दैट द क्लासिकल मिस्ड, है ना. उनके हिसाब से मनी का कोई काम नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा. बट कीन्स ने बोला कि मनी और बॉन्ड में ट्रेड ऑफ रहता है. अगर इंटरेस्ट ऊपर जाएगा तो लोग कैश होल्डिंग कम करेंगे. नाउ द डिफरेंस वाज दैट ही सेड कि मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा उसके लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए, जो कि मॉनेटरिस्ट ने बोला कि नहीं इतना नहीं है. ठीक है. सो यहां तक बात समझ में आई? ओके. राइट. सो देन दिस इंप्लाइज व्हाट? यहां तक दिस इंप्लाइज दैट मनी is not the only determinant of nominal income, which is PY. क्योंकि anything that changes velocity, that will change PY. ठीक है. तो इसका मतलब कि हम टारगेट कर सकते हैं और भी चीजों से इसके, जो कि क्लासिकल्स के उसके अगेंस्ट था, उसके मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी था व्हाट दे कंक्लूडेड, राइट. सो वन वे टू अफेक्ट पीवाई इज देन फिस्कल पॉलिसी, है ना. और ये एक पॉलिसी कंक्लूजन है, राइट. मनी इज द नॉट द ओनली डिटरमिनेंट ऑफ पीवाई, प्लस ड्यूरिंग डिप्रेशन money was not a very, you can say that, effective, or not effective, money was not a very strong determinant of PY, right? So let me just write over here that P assumed constant. So when I say PY, nominal income, I'm basically talking about income. अगर हम ISLM की बात करते हैं तो इनकम और नॉमिनल इनकम सेम ही होगा, क्योंकि P फिक्स माना जाता है शॉर्ट रन में. ठीक है. सो देन वन थिंग द थ्योरी टेल्स देम कि सिर्फ मनी से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी से ही आप नॉमिनल इनकम को टारगेट कर सकते हो. ठीक है. और साथ साथ दे ऑल्सो न्यू दैट, मतलब ड्यूरिंग डिप्रेशन, की मनी बहुत ही बेकार डिटर्मिनेंट है क्योंकि ऑफ फ्लैट एलिमेंट्स TIS, राइट. Because your LM is flat,
and IS is T. All right. So this implies the implication, which I've already talked, was that policy prescription all right, so this is that could in theory, would not in reality. Along with this, there were multiple reasons for low interest, low and stable interest rate regime. है ना? So I've already told you these reasons. So एक reason ये था कि government debt था, right? So government debt due to war expenditures. And the other was that money demand assumed to be very volatile. All right. So result क्या था? Result was that key goal of monetary policy peg, right? ऐसे कर लो के was to coordinate with fiscal policy and peg or fix interest rates at low levels for stability. What was the implication? Control of money supply was lost. है ना? तो इनकी थ्योरी ने इनको बताया कि मनी सप्लाई बढ़िया है, मनी सप्लाई भी अफेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ मनी सप्लाई अफेक्ट नहीं करता है, यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड देन द रियल सिचुएशन टोल्ड देम कि इस जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें मनी सप्लाई काम भी नहीं करने वाला ज्यादा. ठीक है? So then it's better to target interest rates, which also had other political reasons. So that's what they did. They lost control of money supply, but they were not very bothered about it because it was not important to begin with, right? But it did not bother them.
Okay, now let's get to Friedman's theory of money demand. All right. So over time I've already explained, है ना, मैंने लिखा भी है ऊपर, अगर मैंने नहीं लिखा है then I'll write. Okay, then let's write, है ना. So what happened was over time, ISLM curve का slope change होने लग गया, right? So over time, underlying conditions changed. Right? So economy क्या-क्या change हुआ? Economy moved to a steeper portion of LM, है ना? IES or interest sensitivity of investment demand increased, right? जब excess capacity खत्म हो गई, which means that IES became flatter. And money supply became more and more uncontrolled due to interest pegging. Plus became more relevant due to changing slopes of IS and LM. Right? So what Friedman said was, Friedman's view was that money demand is not as volatile. Not extremely sensitive to rate of interest. Therefore, ROI targeting should be abandoned, right? Alright, यहाँ से ब्रैकेट में कर दे रही हूँ. ये later policy prescription है. So it is not that sensitive to rate of interest. And what he also said was that you do not need to differentiate between, you know, transactions demand and speculative demand. इतना करने की जरूरत नहीं है. Money demand है. कुछ like some part of it is determined or is dependent on what the nominal income is, and some part is dependent on whatever is the rate of interest going on, right? So we don't have to differentiate between oh, excuse me.
So we don't have to differentiate between different kinds of money demand. So first of all, this. The second is that there is no need to differentiate between transactions and speculative. So, clear? Yes, ma'am. Okay. So then फ्रीडमैन का जो मनी डिमांड फंक्शन था, इट एक्चुअली स्टार्टेड लाइक द कैम्ब्रिज अप्रोच. ठीक है. सो कैम्ब्रिज ने QTM was basically MB is equal to PY, which was a very mechanic relationship जहाँ पे हम किसी भी डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते थे, है ना. इट वाज जस्ट मैथ. बट कैम्ब्रिज ने उसको इम्प्रूव किया. नॉट कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट्स इम्प्रूव्ड इट and then talked about money demand, and then what that looks like, what are the variables that it is dependent on. और उसके बाद मनी सप्लाई जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम होगा, इक्वेटिंग. तो ही ऑल्सो डज द सेम थिंग, फ्रीडमैन. लेकिन वो जो मनी डिमांड फंक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं. सो फ्रीडमैन स्टार्ट्स देयर. सो फ्रीडमैन्स अप्रोच starts at the Cambridge money demand function and basically improves it. So let's see how it improves it. According to Friedman, money demand is a function of the following things. Again, the demand for liquidity. So cash balances, prices, right? Income. What he also does is, Keynes ने क्या किया था कि पूरा सारा एसेट मार्केट को बॉन्ड्स बोल दिया था, है ना. So he just said that everything is a bond only, so either it gives interest or it doesn't give interest, right? So then you can just say that या तो कैश है या तो कहीं पैसे लॉक्ड है, और लॉक्ड है तो इंटरेस्ट मिल रहा है. But Friedman also, tries to improve upon it by talking about various categories of assets. So then he says that money demand responds to the interest rate on bonds, the interest rate on equities, and the interest rates on durables. So I'll tell you what this means, right? So this is your bonds, equities. अभी देखा जाए तो इससे भी यू कैन, अगर तुम चाहो फाइनेंशियल एसेट्स को क्लासिफाई करना, तो ये तीन ही थोड़ी काफी हैं, या बॉन्ड्स और इक्विटीज ही थोड़ी काफी हैं, और बहुत सारे कैटेगरीज में डाल सकते हो. बट आई मीन दैट्स व्हाट ही डिड, राइट? सो दिस इज नॉट अ वेरी big improvement. It just says that the interest earning assets are not a homogeneous category. ठीक. ये D क्या है? These are durables. So what he said was, so durables वो है जो कि of course इंटरेस्ट नहीं देते हैं, है ना. तुमने जैसे घर खरीद लिया है, तुमने कोई ऐसा एसेट खरीदा जो कि एक ड्यूरेबल एसेट है. जमीन हो गई, घर हो गया, आई डोंट नो, गाड़ी इज नॉट अ गुड एग्जांपल. जिस भी एसेट का बेसिकली प्राइस फ्यूचर में बढ़े. सो मेनली योर एनी गोल्ड, राइट. गोल्ड एक ऐसा एसेट है. उसके बाद तुम्हारा जो भी प्रेशियस मेटल्स, वैसे एसेट्स हैं. गाड़ी नहीं है क्योंकि गाड़ी हमेशा डिप्रिशिएट ही होगी. तो ये सारे जो एसेट्स हैं उसमें भी तुम पैसे लगा सकते हो. हाँ. और उसका कहाँ से, इस टाइप के एसेट में फायदा कहाँ से मिलता है? कोई इंटरेस्ट तो नहीं देता है, घर को इंटरेस्ट नहीं देता है, गोल्ड को इंटरेस्ट नहीं देता है. बट द आइडिया इज दैट इनका प्राइस ऊपर जाएगा, right? So they actually, the return on these assets, this is basically the return on durables. The return on durables is basically dependent on the inflation. So जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस एसेट का जो है घर के दाम ज्यादा बढ़ेंगे, तो इस केस में यू विल नॉट रादर हैव कैश, यू विल इन्वेस्ट इन द ड्यूरेबल्स. एंड दिस इज
because qualitatively the relationship is the same. अब अगर तुम्हारा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, सॉरी इंटरेस्ट रेट हाई है, दाम कम है, तो तुम खरीदते हो वो, है ना? तो सेम काइंड ऑफ आर्गुमेंट अप्लाइज हियर. इफ दिस इज समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट टू गो अप इन द फ्यूचर, you will shift your assets from cash to buying these durables. So these are those durables जिसका कि basically future में क्या बोलेंगे उसको, value enhance होने वाला है, right? So we can say that so durables जो हैं they do not pay interest but appreciate in value. Right? So this implies that the return on durables is ultimately a function of the expected inflation rate, right? So their return is dependent on expected inflation. Okay. So now, what is the relationship with either of them? So what he said was that the money demand is directly proportional to PY, which is the nominal income. And it is indirectly proportional to these returns: bonds, equities, durables. All right. Now what we will do is we will use this, let's call it 1, to restate the quantity theory of money. How can we restate? We can write it as that the money demand is some function k, right? K times py, है ना? और ये k क्या है? K है function of RB, RE and RD. मनी डिमांड जो है is some k. K क्या था? K क्या था? K क्या था? ये वाला लिखा हुआ है ना कैम्ब्रिज वाले में, यहाँ पे K क्या था? Income sensitivity of money demand. What proportion of nominal income do you hold as cash? याद आ रहा है? कैम्ब्रिज में हमने ऐसे ही लिखा था ना, MD is equal to KPY. याद आया है ना? अब इसको इम्प्रूव कैसे किया? के उन्होंने क्या कहा था कि के एक एक्सोजेनस है और के और वी एक्चुअली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते थे. के भी एक्सोजेनस, वी भी एक्सोजेनस. अल्टीमेटली यू कैन थिंक ऑफ इट even in intuition, they are just reciprocals of each other. But what he said was कि k py तो है लेकिन ये k भी सिस्टम के अंदर डिटरमिन होता है. k is not exogenous, right? So it is not constant but endogenous. ऐसे स्टेट करने से it takes into account
the role of money as an asset. ठीक है? And then it also says that basically K के manipulation से और जो velocity ऊपर नीचे जा रही थी, right? So velocity के change होने के वजह से ही you could see that things other than money supply were able to affect your income. ये इसने allow किया है. So now the Friedman's approach also allows that when your interest rate goes ऊपर और नीचे due to any reason, चाहे वो money supply की वजह से हो या जिसके भी reason से fiscal policy के reason से हो, you will see that velocity goes up and down, right? And therefore you will see short-run effects of any of these government policies on your income, right? Ideally nominal income, but जब तक price नहीं move कर रहा है तब तक income पे, और जब price move करेगा तब पूरा का पूरा price पे, ठीक? So this is where he fit both the things together. All right. So then in equilibrium, simple. So in K, which is a function of R, P. This is the restated part. Same thing, जहाँ पे ये K है, ये क्या है? 1/V, है ना? So हमको क्या पता है कि K is inversely proportional to interest. R हम I लिख रहे थे ना? We were going with I, right? So just let me just write, जहाँ से भी मुझे दिख रहा है मैं I लिख देती हूँ. I'll just write, ठीक है? अपने notes में देख लेना अगर confusion हो तो ठीक है. if you want to correct it, so you can do it, otherwise whatever works. बस अपने आंसर में एग्जाम में कंसिस्टेंटली लिखना, that is all that matters. Also it matters only within an answer. अगर तुमने बाद में दूसरा आंसर में दूसरा कुछ यूज किया है तो that is also fine, right? Just within answer change मत करना. Okay, so then what we have is that this K is nothing but the inverse of velocity. और ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ओरिजिनल QTM था उसमें इस K के चेंज होने का कोई स्कोप नहीं था, इसीलिए the only thing that could affect nominal income was money supply. But now because K also can be changed by other factors, so nominal income or income को भी in the short run income, in the long run more nominal income, both can be affected by other factors. All right. Or yeah. So this is the restatement of QTM. ये था बेसिक ट्रीटमेंट का वो. अब यहाँ पे कैसे मनी सप्लाई का जो है रीअसर्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई इज बिकॉज ही सेड के शॉर्ट रन में तो हमको ये दिख रहा है. शॉर्ट रन में मनी सप्लाई मतलब सॉरी द रीस्टेटमेंट वाज और द रीअसर्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस वाज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि मनी डिमांड इतना वॉलेटाइल नहीं है. तो ये जो के है, के का जो सेंसिटिविटी है इज नॉट वेरी हाई. The sensitivity of money demand to interest rate is not very high. That was the point. So then keeping like pegging interest rate is actually not required, because in the long run jab y will go to yn, everything from the money change will be reflected in y. तो अभी फिर से क्या हो रहा है, बात सेम हो जा रही है, राइट? सो देन लेट मी जस्ट ऑल्सो राइट दैट. सो इन short run P is sticky, implies that
changes in M can change Y. In medium run, P adjusts, Y is back to Yn, which implies that changes in M will be fully reflected in P. Which implies that money supply needs to be managed well. In a rule-based manner, right? And in interest begging should be given up. Okay, so by recognizing the sensitivity of money demand to interest rate and by recognizing that prices are sticky in the short run, monetarists said के short run में कीन्स वाला जो theory है वो applied होता है, लेकिन जो कीन्स का किनीजियंस का ये था कि मतलब शॉर्ट रन में भी मनी सप्लाई का कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा ध्यान देना है. दैट इज समथिंग दैट he did the monitors did not agree with, right? And long run के लिए तो कीन्स ने like the Keynesians didn't even care about long run or medium run, but monetarists and then the synthesizers basically they obviously took things to the medium run, and when things were combined it was seen that money supply जो है given this relationship and given the stability will actually just be reflected in prices. So if you do not manage money supply, inflation जो है वो बहुत ही ज़्यादा high और volatile हो जाएगा, something that is very very bad for the economy. All right. So when you think about differences between monetarists and Keynesians, बेसिक डिफरेंस जो है, देखो मैं केनेजियंस को भी पता था, है ना, केनेजियंस को पता था, मतलब थ्योरी के हिसाब से तो मॉनेटरी पॉलिसी जरूरी था, मनी सप्लाई इफेक्टिव होता, बट रियलिटी में उनको लगता था कि भाई नहीं होगा, राइट? सो द डिफरेंस इज बिटवीन व्हाट दे थिंक और व्हाट दे बिलीव अबाउट द रियलिटी व्हिच इज द स्लोप ऑफ द आईएस एंड एलएम कर्व. ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक? सो दे डिफर इन देयर बिलीफ के आईएएस कितना स्टीप है, एलएम कितना स्टीप है या फ्लैट. And of course, Keynesians did not consider post short run, which the monetarists did. और फिर उस केस में उस चीज को भी मिला के इन्होंने बनाया कि मनी सप्लाई को शॉर्ट रन में इग्नोर करने से तुम्हें लग रहा है काम चल जाएगा, बट ये चीज जो है मीडियम रन में, लॉन्ग रन में इट विल कम एंड कम बैक एंड बाइट यू. सो कीन्स का थ्योरी थोड़ा सा अधूरा भी था और रियलिटी चेंज होने के साथ इवॉल्व नहीं हुआ. थ्योरी नहीं, द पॉलिसी मेकर्स डिड नॉट इवॉल्व. ओके, सो दिस इज इट अबाउट टिल मॉनेटरिस्ट हो गया है. वी विल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विच विल बी ऑन मंडे. ठीक है, आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, सो कल क्लास नहीं होगी. और सेकेंड आज क्या है, आज थर्सडे है ना, हाँ, सो कल नहीं होगी क्लास. विल
मंडे को क्लास करेंगे, रैशनल एक्सपेक्टेशंस और रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशंस, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें वी विल अंडरस्टैंड. एंड देन अनदर, I think one class will be enough for the rest of the models. New classical, new Keynesians, 1 or 2 classes will be enough. हाँ, इसमें एक चीज रहती है जो कि उस दिन तरुण was saying and we missed it. Basically it is there in Ahuja. I'll try to find where it is. But बहुत ही सिंपल चीज है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप. ये कभी कभी टर्म आ जाता है एग्जाम में. इफ नॉट इन दिस एग्जाम, मे बी सम अदर एग्जाम दैट यू गिव नेट में और ये सब में. सो लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट इट. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. जो हमने वो किया था ना, अनप्लैन्ड इन्वेंटरी वाला, वो ही चीज है. ठीक है. सो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? जहां पे डिमांड दो तरीके से देख सकते हैं, या तो फिश के डॉनबुश में, हाँ हाँ, डॉनबुश का ही डीएफएस में जो हम कर रहे थे ना, डीएफएस में द अनप्लैन्ड इन्वेंटरी, वो ही सेम चीज है. ठीक है. सो डीएफएस में तो है. आई डोंट नो अबाउट पिशके. ऑल राइट. सो बेसिकली द आइडिया इज दैट वी कैन डू इट इन 2 ways. एक तो हम एएसएडी मॉडल के साथ कर सकते हैं, या फिर हम जो सिंपल किनेजियन मॉडल है उसके साथ भी कर सकते हैं. You can do it in either way. So if you look at this, okay, this is your y and this is your AD, right? So then ये हमारा AD कर्व था, और ये हमारा, this is your 45-degree line, right? So this is the equilibrium output, y star. अब इसमें क्योंकि ये शॉर्ट रन है, तो इसमें you can just think in terms of short run. Price wise movement की जरूरत नहीं है. So when you are somewhere here, suppose this is where you are, right? तो इस केस में you will have too much of production for given level of output, है ना. तो देखो y1 में, sorry, too much of demand compared to the output, है ना. So at this point the demand is here, and your output, for this output the demand should be this much, and you will have unplanned inventory. This is your output is higher. Sorry, this is the case where a production is higher than demand, है ना. So इस केस में you will have again unplanned inventory हो जाएंगे. तो यहाँ पे तुम्हारा the way the movement has to happen, I'm getting a little confused कि इसको inflationary बोलते थे. Let me look at this other one, right? So this is where you look at it from the ASAD perspective. So if this is your AD, this is your AS, this is equilibrium. YN से शुरू भी कर सकते हैं, या जो भी Y star है. If you are somewhere here to the right, है ना, so then if your output is higher than the demand, this is where your, this is यहाँ पे Y1 पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. This is where you will have accumulation, addition to inventory, unplanned inventory additions होगा. यहाँ से the price will have to fall, right, so that your output basically comes back. And यहाँ पे you will have demand higher than supply. So again, the movement will be in this direction. Now, what I'm getting confused is कि I know that this is called inflationary gap. I'm almost sure, but मैं ये थोड़ा सा I will confirm and tell you this. ठीक है.
I'll confirm, आज ही मैं confirm कर दूंगी इसको, and I will correct this graph. All right. So the idea is that wherever you are away from the equilibrium, so you will see that there is a gap created जिसको हमने unplanned inventory के terms में किया था. Now we will just look at it in terms of inflation, क्योंकि इस केस में हमारे पास price move नहीं हो रहा है, so this is prices are fixed in this particular scenario, but when you look at AS and AD curve, so you can look at price movements as well. So इस वाले scenario में it's usually called the inflationary gap. I will confirm that. मैं थोड़ा सा I'm just because this is where your supply is higher than demand, so I'm not sure whether इसको inflationary कहते हैं कि नहीं. So it can very well be called inflationary क्योंकि कई बार इनके terminology काफी counterintuitive भी होते हैं. We've already seen, for example, Nairu, right? For example, aggregate supply relation ही कह लो. So that does happen. So it may be. I will just confirm कि इसको ही कहते हैं और क्यों कहते हैं. I'll just put it on the board work itself. Okay. So this finishes everything till monetarists. इसके बाद जो भी है उसके बाद बहुत ही recent developments हैं. New classicals or new Keynesians, and new Keynesians is where finally things have converged, right? So you will see that कुछ ऐसा movement चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा extreme से classical थे, फिर Keynesian थे, है ना, फिर किसी ने synthesize किया monetarists और ये सब करके फिर finally we have reached where things have been realized के शॉर्ट रन में स्टिकीनेस होती है, लॉन्ग रन में मनी पूरा प्राइस पे दिखता है, एंड दीज थिंग्स हैव बीन रियलाइज्ड. हाउ द थ्योरीज हैव इम्प्रूव्ड इज समथिंग दैट वी आर लेफ्ट टू टॉक अबाउट, है ना. और डिफरेंस वो कहाँ से आता है, डिफरेंस अंडरलाइंग असम्पशन से आता है, किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस फॉर्म होती हैं, किस तरीके से, और हाउ मच स्टिकीनेस डू यू अज्यूम इन प्राइसेस, व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हिच यू अज्यूम स्टिकीनेस. All these things will now be explored later, but this is a small part क्योंकि हम already समझ चुके हैं सारा background. Now we will only see that how future things have evolved. All right, so let's stop here today, and let me know if you have any questions. इसके MCQs also I will upload. Meanwhile, if you have any backlogs, please finish them. You have again 3 days हैं तुम्हारे पास, तो वो खत्म कर लेना, नोट्स वगैरह अपना फिनिश कर लेना. ऑल राइट. चलो, थैंक यू.